much of a psychological and mental like hold it sort of has over your day-to-day life after incorporating a good routine of physical fitness, you know. क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, just to like give a context of why I'm asking the question is कि अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक रूटीन में आ गया हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेट्स से कुछ हुआ, इंजर हो गया, मैं नहीं कर पा रहा, तो वो मेंटल स्कार बन के एक रह जाता है कि अरे यार मैं शायद कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ, या मेरे से अब वो लाइक वो यू नो लाइक मेरे को करना है बट कर नहीं पा रहा, यू नो. तो वो एक मेंटल होल्ड ले आता है आपके ऊपर, क्योंकि यू गेट यूज्ड टू योर रूटीन, राइट. तो वो एक बार चले जाते हैं. तो हाउ मच डू यू थिंक लाइक अगर मैंने तेरे को कल बोल दिया कि नहीं तू जॉगिंग नहीं कर सकता, या फिर तू यू नो इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, हाउ मच ऑफ अ इम्पैक्ट विल दैट क्रिएट इन योर लाइफ? अभी the part where we talk about the psychological and mental state specifically, so mentally we focus more on walking. Mentally जब you go for a walk, तो your mind goes into the relaxation mode, wherein you are walking at एकदम leisure में, you are walking आराम से, the oxygen levels are pretty good वो time पे, your breathing is more controlled walking के time पे. So overall what happens, this process which are aligned वो तुम्हारे directly brain को hit करता है. So in a way it gives you a very positive atmosphere, I would say, कि every time I go for a walk मेरा एक mental state बहुत strong हो जाता है. Okay. और you can say that कि mentally I am very relaxed वो period में, because क्या है, you have एकदम कंट्रोल रहता है सब कुछ, यू आर नॉट वॉकिंग एकदम ऐसे फास्ट, एक सर्टन लेवल ऑफ स्पीड और मेंटेनिंग. तो वो स्पीड के साथ द माइंड गेट्स यूज्ड टू, एंड व्हेनेवर यू गो फॉर अ वॉक, तो वो स्पीड में इफ यू मेंटेन दैट एवरी टाइम यू गो, यू विल गेट अ मेंटल आई वुड से रिफ्रेशमेंट, कि यू सी दैट कि अरे मेरा एक अलग स्टेट रहता है व्हेन आई गो फॉर अ वॉक. तो यू आर सेइंग कि if you let it go, then your mental phase उस तरीके से होगा कि like I won't feel that kind of calmness again. Like वो उसके लिए फिर देखो शायद कोई दूसरा substitute ढूंढना पड़े, but then again like physical fitness के थ्रू ही ढूंढेगा वो, you know, like calmness तो उसके थ्रू ही आएगी. तो yeah, man, that's a good. There is also a thing where you will see na, jogging or sprinting. Many people do it out of frustration. So whenever you have what I have seen is that there are certain people who are frustrated with something in their life, be it anything, personal हो, professional हो, कुछ भी हो, तो एक certain frustration रहता है, तो they try and bring it out walking, इसमें jogging और running में. Oh, so that's a good outlet for them. Yeah, so in a way Let go of that energy. Yeah. Okay. So because that frustration levels get under control when you test your body in that level of frustration. So when you come back after that walk, after the jog or run, there's a certain freshness in you. And many people love that कि मैं अकेला जाऊँ jogging run करूँ. There are many people बोलते कि चलो मेरे साथ कोई तो चलो साथ में. बट अभी कैसे देयर आर सर्टन सेट ऑफ पीपल उसे कि जॉगिंग रनिंग मेरा मी टाइम है, उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसमें समझो गुस्सा निकाल लूँ किसका, या मैं मेरे मसल्स को टेस्ट कर रहा हूँ टू इट्स मैक्सिमम लेवल, थोड़ा सा स्ट्रेन हुआ तो भी चलेगा बट वो टेस्टिंग हो जाए. सो देयर आर सर्टन पीपल इंक्लूडिंग मी, आई लाइक गोइंग ऑन अ वॉक ऐसे अकेले, या जॉगिंग रनिंग करने को आई लाइक गोइंग ऐसे अकेले, बिकॉज वो क्या है, इट इज़ योर टाइम. उसमें भी तुम अगर यू विल ब्रिंग समवन साथ में, तो द पीस विच यू वांट टू अचीव एट दैट टाइम, किसके लिए साथ वो पीस विच अचीव वो टाइम वो नहीं रहता है, बिकॉज क्या है वो हैबिट तुम्हारा डेवलप हुआ है पहले से. तो इन अ वे यू फील कि अरे नहीं मेरे को अकेला ही जाने का है. सो इट इज़ इन अ वे यू कैन कॉल इट एक फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने का भी एक रह सकता है, और you want peace with yourself. So it's like a quality alone time. Yeah. Okay. Nice. Yeah, I can see how it can be a good, almost like a stress reliever.
like actually I had a friend who used to go for a run at night, because again at night it's peaceful, everyone's sleeping, and you can just it's almost like why people go for long drives sometimes at night. It's just peaceful there, and you can just what's the line, bas wadiyan hai aur main hu. Yeah, it's just that. Okay, yeah, so again man, like mental fitness, physical fitness, your emotional well-being, everything's like so much dependent on each other, and किस तरीके से it impacts, like it's almost unpredictable to figure out how certain things might affect certain things. I was looking at one of the podcasts, I think it was Dr. Mike's podcast. Do you know what Dr. Mike is? It's basically like a YouTube, it's a young doctor / YouTuber. So he was talking about a lot of your physical trauma that you have gone through pehle can also later on in life manifest itself as a physical injury. So like aapka mental well-being is connected to your physical fitness in certain ways, and also vice versa. And also like it's also a major question कि किसको priority दोगे आप. Like if you had to give priority to your mental fitness, to your physical fitness, what would you like वहाँ पे what would you give the edge to? Like for me what would good, I'll go with the physical and then mental, because every time I go through the physical mental route, वो प्रोसेस कैसा है, इट इज़ अ प्लान थिंग. मतलब तुमको यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट प्रोसेस. वंस यू गो विद दैट प्रोसेस ना, तुमको वो प्रोसेस में यू गेट दैट फीलिंग कि अरे नहीं ये सही है, ये अपने लिए सूटेड है. मैंने पीपल प्रीफर कि चलो हम लोग पहले मेंटली खुद को शांत करेंगे, देन विल थोड़ा फिजिकली वीर कीप आवर बॉडी को ऐसे मेंटेन रखो या समथिंग दैट. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ना. इट इज़ मोर टुवर्ड्स कि तुम इंडिविजुअली क्या प्रेफर करते हो. So for me it is going through the physical and then the mental route, because my dynamics I would say works कि मैं physically खुद को थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ या स्ट्रेन आउट कर लूँ, तो mentally there is a certain level of peace जो मेरे को मिलता है.